Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. So, am I audible? Okay, just a few minutes, we will start the session. Okay, very good. So, finally the wait is over. OPSC is ready with the new syllabus for mains examination. Okay, so बहुत पिला एक्सपेक्ट करथिले कि सिलेबस सहित माने नोटिफिकेशन सहित आसीबो नया पैटर्न सिलेबस बट ठीक अछि बेटर लेट देन नेवर सो ओपीएससी ऑलरेडी सिलेबस रिलीज कर दिस तो आमे देखिबा क्विकली देखिबा कि कोन कोन जिंस एक्स्ट्रा आपण मन पई अछि आ तापर नेक्स्टली आमे फ्यूचर रे डिस्कस करबा कि कोन केमति आमे करि परिबा सोर्सेस कोन कोन फॉलो करबा तो इनिशियली आमे एबे देखिबा कि सिलेबस रे कोन कोन अछि ओके सो आपण मन समस्त जानि कि जनरल स्टडी दीटा पेपर थिला एबे चारटा पेपर हेछि सो दिस इज द जनरल स्टडी सिलेबस डिटेल ता पूर्वरु गोट किसी नोटिफिकेशनटा अच्छी आम देखीदा नोटिफिकेशन में आप समस्त जानी कि एक्स्ट्रा एडिशनल अटेम्प्ट समस्त प्रोवाइड करा जो मैंने भी देते से समस्त एडिशनल अटेम्प्ट प्रोवाइड कराई जहाँ भी अटेम्प्ट एग्जस्ट हो समस्त अपेयर करें तो तो आम ये देखा कि नेक्स्ट रे एसए रे कौन चेंज होती दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एसए रे कौन चेंज होती एसए essay 250 marks essay okay so 250 marks रे essay will be paper 1 so आपण माने भल से देखंतु candidate may be required to write essays on multiple topics okay candidate will be required to write essays on multiple topics they will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange in their ideas in orderly fashion and write concisely credit will be given for effective and exact expression see essay paper आपणकर गोटे एसे थिला एबे मल्टीपल टॉपिक्स रे आपनको एसे लिखिया पड़िबो सो मे बी यूपीएससी रे जेमती दुईटा एसे पडुची एक्जेक्टली आपण ओपीएससी रे दुईटा एसे पाइबे 125 मार्क्स ईच टोटल 250 मार्क्स सो 125 मार्क्स आपनको एसे लिखिया पड़िबो मे बी आपणकर वर्ड लिमिट 1000 टू 1200 वर्ड्स रही पारे प्रति एसे पाई आपणकर 125 मार्क्स एंड 1000 टू 1200 वार्ड्स वर्ड लिमिट ठीक अच्छे तो आपड़ यहाँ गोटे गोटे चेंज आपको जाना पड़ो कि एसे टॉपिक आपन को दीटा दिज्व मोस्टली दीटा एसे आपको दिज्व लिखापी ठीक अच्छे ओके देन आम आसवा जे जीएस पेपर पेपर रे कौन सिलेबस रे चेंज होती नेक्स्ट आम देखा जीएस सिलेबस रे जीएस जनरल स्टडी 1 रही आपंकर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ओडिशा हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी ओके एक्चुअली एठी ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा भी लिखाई डिटेल ठीक अच्छे जहाँ भी हो तो जो नोटिफिकेशन आसला ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा भी लिखा जाइए ठीक अच्छे ओके सो हेरिटेज कल्चर रे डिटेल सिलेबस रे से कौन मेंशन करछंती सो हेरिटेज कल्चर रे आपनकर बहुत इंडिया पार्ट आसुची एंड ओडिशा पार्ट भी आसुची सो इंडियन कल्चर कवरिंग सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स ओके आर्ट फॉर्म्स आर्किटेक्चर लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा ऑलरेडी क्वेश्चन ओपीएससी रे आसीची टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा रे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा ऑलरेडी ए दुटा पार्ट आपणकर सिलेबस रे थिला ओल्ड ओपीएससी सिलेबस रे क्वेश्चन भी आछि भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ ओडिशा क्वेश्चन आछि इवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर ए पार्ट नुआ ऐड होइछि आपन गड देखिया पड़िबो रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल्स सो ए ओडिशा कल्चर पार्ट रे आपनकर एतिकी पार्ट रहिला गोटे होची टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा भक्ति मूवमेंट एंड इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर देन फेस्टिवल्स रीजनल ट्रेडिशंस भी क्वेश्चन आसी पारे फेस्टिवल भी क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि नेक्स्ट आपणकर मॉडर्न हिस्ट्री रे जहाँ भी यूपीएससी सिलेबस रे अच्छी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी माने आपणकर ऑलरेडी 1750 रु कवर होची मॉडर्न हिस्ट्री ओके सो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द
present significant events, personalities and issues. Okay, then freedom struggle ro various stages, important contributors, contribution from different parts of the country. Then very important post independent consolidation and reorganization within the country. This is important. Aguru nothila post independence UPSC syllabus रे अछि, तेणु post independence also रहिला. Kalinga War and its significance, very important. Dynastic history of Odisha, Mahabeghavana Kharavalankara dynasty, then Sombansi, Gangas, Gajapati जो माने भी रहिले. Okay, then तापर next आपनकर आसीबो the early resistance जो ब्रिटिश रूल को आमर जो रेजिस्टेंस हेची, early resistance आपनकर पाइक रिबेलियन, वीर सुरेंद्र साय, रिवोल्ट ऑफ 1857 ओडिसा रे केमिति एगुड़ाक हेची आपनकु जानिया पड़े. रिवोल्ट ऑफ 1857 ओडिसा रे केमिति हेथिला, पाइक रिबेलियन केमिति हेथिला, वीर सुरेंद्र साय एंड रिवोल्ट ऑफ 1857. तो से पार्टटा से माने रखिछंती. देन ओडिसा प्रोविंस क्रिएशन. ओके, तो एथरे ओडिसा प्रोविंस क्रिएशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आछि. फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिसा, द सोशल बेस ऑफ ओडिया नेशनलिज्म. ठीक अछि, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन ओडिसा, देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ओडिसा. तो आमे एबे जस्ट ओवरव्यू नबा गोटे सिलेबस रो कोन कोन अछि, देन आमे डिस्कस करिबा कोन कोन डिटेल अछि, आमे पर डिस्कस करिबा. तो ऑलरेडी एथरु किछि क्वेश्चन ओपीएससी रे ऑलरेडी पढिछि आगुरु. ठीक अछि, तो तेणु दिस थिंग्स आर इंपोर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा. फिजिकल इकोनॉमिक सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूपीएससी रे अछि. इंपोर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना, एटा यूपीएससी सिलेबस रो डायरेक्ट कॉपी करा हिची. अर्थक्वेक, सुनामी, volcanic activity, आपन cyclone, geographical feature and their locations, changes in critical geographical features including water body, ice cap, ए सब रे कोन changes आछि, flora and fauna and their effect of such changes. Okay, then special reference to Odisha geography. Odisha geography रे आपन कोन कोन रहिला, Odisha रो natural resources, water, forest, minerals, Odisha physiography and drainage system, then salient feature of Indian society. This is the society part. Okay, salient feature, this is the geography part, that Odisha physiography, river system, natural resources. ए पार्टटा आपनकर ऑलरेडी ओपीएससी रो प्रीवियस सिलेबस रे भी थिला. ठीक अछि, ओडिशा ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, योर वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स पार्टटा नथिला. तो फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन थिला. तो वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स अछि. ओके, डेफिनेटली ज्योग्राफी तो रहिबो, डेफिनेटली जिंसोडा रहिबो. ओके, देन ओडिशा फिजियोग्राफी एंड रेफरेंस सिस्टम. देन सोसाइटी पार्ट जोटा आपनकर ओपीएससी रे अछि, सोसाइटी पार्ट सेथरे आपनकर एक्स्ट्रा जिंसोटा रहउची, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा. ओके, सो एटा रहउची आपनकर ओडिशा पार्ट. ओके, just a minute. Then आपण सोसाइटी रे आपण आछि रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, population and associated issues, population and associated issues, then आपणकर poverty and developmental issues, urbanization and then problems and remedies. Okay, ए जिनसटा आपणकर ऑलरेडी यूपीएससी रे अछि. तो दिस has been taken directly from UPSC syllabus. Then effect of globalization on Indian society and as a whole Odisha. तो globalization impact Indian society ऊपर कौन रहउची and Odisha ऊपर कौन रहउची, डिटेल ए विषय रे दिया जाइछि. तो नेक्स्ट होउची कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इन ओडिशा, अर्बानाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बन सेंटर्स इन ओडिशा. तो ए पार्टटा आपनकर रहउची ट्राइब्स इन ओडिशा, देन आपनकर अर्बानाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन ओडिशा. ओके, अर्बानाइजेशन आउ तार इम्पैक्ट कौन रहउची ओडिशा पर, से पार्ट रहउची. ठीक अछि, हेलो एवरीवन.
ओडिया अटेम्प्ट कले बेटर हो ना इंग्लिश रे तो तुम जदि जो लैंग्वेज रे कंफर्टेबल जदि इंग्लिश रे तुम कंफर्टेबल इंग्लिश रे अटेम्प्ट करो कहीं ना तुम यदि अटेम्प्ट कर माने तुम मेन भी इंग्लिश रे दबो देन आपन इंटरव्यू रे भी तुमको इंग्लिश रे दबा पड़ो ठीक अच्छे ओके सो ओडिशार ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कौन ग्रोथ कौन देन अर्बानाइजेशन ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अर्बन सेक्टर केमती ग्रोथ होती ओडिशा रे सोशल एम्पावरमेंट कम्युनालिज्म रिजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एथरो आपनकर जहाँ अच्छी यूपीएससी सिलेबस रे अच्छी ठीक अच्छे तो यूपीएससी सिलेबस रे जहाँ भी अच्छी सेम अच्छी बट ओडिशा पार्ट आड होती ठीक अच्छे सिनाप्स टेस्ट सीरीज केमती बाय करी हबो यू कैन कांटेक्ट in the number given below okay they will send you the details so then next as paper 2 तो paper 1 रे आपण मानकर यूपीएससी सिलेबस रे जहाँ अच्छी सब अच्छी बट एक्स्ट्रा आपनकर ऐड होती हिस्ट्री रे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा देन भक्ति मूवमेंट एंड इंपैक्ट देन ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर ओके लिटरेचर कंप्लीटली आपको इवोल्यूशन पढ़ा पड़ो रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिया ओडिशा रीजनल ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स ए जिन हिस्ट्री रहा माने एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर पार्ट रे देन कल्चर पार्ट रे देन एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट रे ओडिशा रे आपनकर जो डायनास्टी रहा ओडिशा ठीक अच्छे भौमस महामेघवाहन सोमवंशीज देन गंगज गजपति एमाने देन आपनकर मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री जो रिबेलियन एगेंस्ट ब्रिटिश रूल पाइक रिबेलियन है वीर सुंदर साय एंड योर 1857 रिवोल्ट ये सब जिन रहा देन ओडिशा प्रोविंस केमती क्रिएट है सेटा रहा प्रजामंडल मूवमेंट सोशल बेस केमी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट केमती है ओडिशार सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ये सब जिन आपनकर रहा जियोग्राफी आपनकर रहा मेजरली फिजियोग्राफी ड्रेनेज सिस्टम रिवरिन सिस्टम वाटर फॉरेस्ट एंड मिनरल्स ओके देन इंडिया ओडिशा सोसाइटी फीचर भी आपनकर रहा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा ओके देन आपन सोसाइटी पार्ट एक्स्ट्रा रहा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इंपैक्ट ऑन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओडिशा ओके देन अर्बानाइजेशन रोचे ट्राइब इन ओडिशा अर्बानाइजेशन इन ओडिशा ये सब जिन रहा तो पेपर 2 रे आपनकर मेनली किसी माने एक्स्ट्रा ना यूपीएससी सिलेबस रे जहाँ अच्छी से अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग इवोल्यूशन बेसिक फीचर फंक्शंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स इश्यू चैलेंजिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर devolution of powers finances up to local level and challenges okay then a separation of power between various organs and dispute redressal mechanisms okay separation of power is very important okay then comparison of Indian constitution scheme with that of other countries Indian constitution au other constitution re kemti comparison rochi then parliament and state legislature structure functioning and conduct of business then power and privileges and issues arising out of these okay parliament और state legislature कौन कौन issues अच्छी then structure organization and functioning of the executive and judiciary okay legislature गुड़ा पढ़िले legislature then your executive and judiciary ministries and department of the government pressure groups and informal association and their role in polity okay then salient features of representation of people act Odisha's right to public service act and Odisha लोकायुक्त act आपण ए दुटा जिनस ओडिशा रे पॉलिटी एक्स्ट्रा देखुचंती जे आपनकर ओडिशार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड ओडिशा लोकायुक्त एक्ट आपण जानिचंती जे ओडिशा लोकायुक्त गोटे इंस्टीट्यूशन अच्छी ठीक अच्छी तो आपण ए जिनस ए दुटा जिनस ऊपर फोकस करिवे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओके then statutory regulatory and various quasi judicial bodies okay statutory regulatory and various quasi judicial bodies okay then these are the polity aspect eta so polity aspect thila apanakara okay then important aspect of governance transparency accountability e governance eta governance part ra apan rahila okay governance part rahila transparency accountability e governance ro success kon limitation kon application kon potential kon achi okay e sobu jinsa then role of state and state civil service central and state civil service in a democracy okay तो state civil service रोल भी आपन को एथरा पढ़िया पड़ियो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पीआरआई ओडिशा ऑलरेडी प्रीवियस ओपीएससी सिलेबस रे अच्छी ओके ओडिशा एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टेट रिलेशन जहाँ भी रहिबो आपन मानकर ठीक अछि देन सोशल जस्टिस रे जहाँ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ओके इंडिया रे कोन ओडिसा रे कोन सब पढ़िया पड़ियो आपन हला देन
development process and development industry, role of MSME, women and SSG, okay. Then welfare scheme, जहाँ यूपीएससी सिलेबस रही सब पढ़ा पड़ो प्लस सहित ओडिशा पोर्सन पढ़ा पड़ो वल्नरेबल सेक्शन मान कौन स्कीम अच्छी परफॉर्मेंस कौन रोचे कौन मेकानिज्म अच्छी लॉ अच्छी इंस्टीट्यूशंस अच्छी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन मान कौन कौन इंस्टीट्यूशन तैयारी मेकानिज्म कौन अच्छी लॉ कौन अच्छी ओडिशा इंडिया दुईटा सेक्शन आपको पढ़ा पड़ो ठीक अच्छे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज सोशल सेक्टर इनिशिएटिव हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स रे कौन कौन इश्यूज अच्छी इनिशिएटिव निहाई बोथ इन इंडिया एंड ओडिशा कॉन्टेक्स्ट इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके तो आपन देखंतु जदि ओपीएससी यूपीएससी सिलेबस आपन देखिए यूपीएससी सिलेबस को ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे मिसई दिया जाइछि ओके यूपीएससी सिलेबस रे जहाँ अच्छी आपन इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे पढुथिले एथरे जहाँ अच्छी आपन इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे भी पढ़िबे एंड ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे भी पढ़िबे ठीक अच्छे तो जो मैंने ओपीएससी देवे से माने यूपीएससी ठू अधिका प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी रे जो मैंने पढ़ुं से माने ओनली इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे पढ़िबे जो मैंने ओपीएससी दौरान से माने इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे भी पढ़िबे प्लस ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे भी पढ़िबे तो सिलेबस यूपीएससी अपेक्षा टिके अधिका गला ठीक अच्छे ओके देन आम पढ़ा GS3 विषय टे देखा GS3 रे आपण मानकर अच्छी टेक्नोलोजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्यूरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आम डिस्कस करथिले साइंस रे सेम जिनस अच्छी जहाँ यूपीएससी अच्छी से अच्छी से जिनस कि साइंस एंड टेक्नोलोजी रो कौन एप्लिकेशंस अच्छी एवरीडे लाइफ रे आमर अचीवमेंट कौन है इंडिजिनाइजेशन कौन है टेक्नोलोजी रो अवेयरनेस कौन अच्छी आमर इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस बायोटेक्नोलोजी ये सब जिनस अवेयरनेस कौन अच्छी अचीवमेंट कौन है ठीक अच्छे मेन सिलेबस आम पर डिस्कस करवा डिटेल डिस्कस करवा एबे जस्ट खाली ओवरव्यू जे केमिति आपण मानकर सिलेबस चेंज होती ठीक अच्छे देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपन आसुची इकोनॉमी रे कौन इश्यूज अच्छी प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट देन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड तार इश्यूज कौन अच्छी एंड गवर्नमेंट बजेटिंग रे यू नो दैट ओडिशा हैज वन ऑफ द best budget practice in the country so definitely Odisha budgeting is important okay government budgeting India and Odisha important land reforms very very important Odisha re kemiti land reform implement hechi India re kemiti implement hechi everything okay then liberalization of the effect of liberalization on the economy India re kon liberalization impact kon hechi Odisha re kon hechi kahi ki na Odisha re liberalization kon impact hechi eta apanଙ୍କର previous OPSC syllabus रे थिला no question is expected on that topic okay then infrastructure energy post okay roads airport railways I think this is port okay ठीक अच्छे जहाँ भी ओपीएससी देछि आमे ताको देखिबा okay so infrastructure energy port roads airport railways in the country and Odisha okay so in the country and Odisha context भी आपन पढ़िया पड़ो okay so then industrialization in Odisha issues and prospects okay industrialization in Odisha issues and prospect industrialization Odisha रे कौन है कौन इनिशिएटिव निया issues कौन अच्छे prospect कौन अच्छे okay very very important then agriculture in the context of Odisha भी आपन पढ़िया पड़ो तो ओपीएससी सिलेबस कंप्लीटली एक्जॉस्टिवली ओडिशा रो सब एस्पेक्ट यूपीएससी सिलेबस रे पूरे देले जहाँ हम सिलेबस या ठीक अच्छे एवरी एस्पेक्ट जहाँ यूपीएससी सिलेबस रे अच्छी तार सब एस्पेक्ट आपको ओडिशा कंटेक्स्ट जानिया पड़ो एग्रीकल्चर रे कौन रहा आपनकर मेजर क्रॉपिंग पैटर्न कौन रहा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम रहा कोल्ड स्टोरेज कौन अच्छी ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग agricultural produce and issues and constraints in India and Odisha okay then PDS public distribution system farm subsidies public distribution system objective कौन limitation कौन revamping केमती हबो animal rearing केमती होउची इंडिया रे कौन होउची ओडिसा रे कौन होउची public distribution system माने साधारण बंटन व्यवस्थार लिमिटेशंस कौन अच्छी इफेक्टिवनेस कौन अच्छी प्रॉब्लम कौन अच्छी इंडिया रे कौन प्रॉब्लम अच्छी ओडिसा रे कौन प्रॉब्लम अच्छी एवरीथिंग यू हैव टू रीड ओके देन दिस इज very very important one thing they have added that
डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम फार्मर इनकम केमती डबलिंग हो पार से जिनटा से आड कर ओके दिस ए वेरी गुड पॉइंट देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ओके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया रे कौन अच्छी ओडिशा रे कौन अच्छी स्कोप एंड सिग्निफिकेंस लोकेशन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट कौन अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन अच्छी ओके वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ओके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ओडिशा रे एनवायरमेंट टॉपिक ना बायोडाइवर्सिटी ओडिशा रे केमती अच्छी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व ऑल दिस थिंग्स जहाँ अच्छी प्लस तार कंजर्वेशन केमती हो पार देन डिग्रेडेशन कौन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कौन होची डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा रिवार्ड पाई डिजास्टर मैनेजमेंट यूएन टू ठीक अच्छे तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री एंड इन ओडिशा स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ओके linkages between development and spread of extremism left wing extremism in Odisha very important because government is taking good steps to control the left wing extremism okay so Samarjit I would suggest bring an integrated course for GS 1 to 3 targeting mains including answer writing then I will definitely go for it okay ठीक अछि I will consider your suggestion okay so security and disaster management okay security disaster management challenges to internal security through communication network role of media and social networking security disaster management GS3 part then एथरा होची कोन इंटरनल सिक्यूरिटी चैलेंजेस अच्छी कम्युनिकेशन नेटवर्क रे कोन अच्छी मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट एमान रोल कोन अच्छी इंटरनल सिक्यूरिटी रे साइबर सिक्यूरिटी बेसिक्स कोन व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्यूरिटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन रे गोटे इंपोर्टेंट एक्ट अछि दैट इज कॉल्ड एज PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA prevention of money laundering act okay very important acts and policies related to cyber security and money laundering definitely cyber security very important topic PML act is very important PML act definitely what a question as per okay prevention of money laundering act okay then security challenges and their management in border area re kon security challenges achi linkages of organized crime with terrorism okay then security forces and security agencies in Odisha and their mandate sabu everything has been linked with Odisha okay GS paper 4 re directive kon achi this paper will include the questions to test candidates attitude and approach to issues relating to integrity probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflict faced by him dealing with society the questions may utilize the case study approach to determine these aspects the following broad areas will be covered see एठी कोन हबो तमरा aptitude कोन अछि गोटे प्रॉब्लम गवर्नमेंट रो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई गोटे तमरा aptitude कोन अछि सेटा को से डिटरमाइन करेंगे क्वेश्चन रे ठीक अच्छे तो देन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ओके एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एसेंस गोटे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस माने ह्यूमन लाइफ रे एथिक्स रो वैल्यू कोन अछि एसेंस कोन डिटरमिनेंट्स कोन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस एथिक्स रो कॉन्सिक्वेंस कोन ह्यूमन एक्शन रे एथिक्स रो डायमेंशन कोन तमे गोटे एथिक्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे एंगेज होची सेतरे एथिक्स रो रोल कोन देन ह्यूमन वैल्यूज कोन ह्यूमन वैल्यूज आमे कोठ सिखिबा लाइफ ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स टीचिंग ऑफ लीडर्स रिफॉर्मर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एमानको लाइफ रे आमे केमिति एथिकल वैल्यूज सिखि परिबा देन फैमिली कोन फैमिली रोल कोन सोसाइटी रोल कोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रोल कोन इनकलकेटिंग द वैल्यूज आमे वैल्यू सिखिया पई फैमिली रोल institute role कोन educational institute role कोन society role कोन all these things you have to read then attitude ro content structure function attitude केमिति influence करे हमर thought को action को behavior को moral attitude कोन political attitude कोन social what is social influence what is persuasion how you can persuade a person गोटे लोक को तमे केमिति persuade करि परिबो administrator तो हेछ OAS officer हबो ना OAS officer हे कि तमे गोटे लोक को केमिति persuade करि परिबो ठीक अछि okay so then your aptitude and foundational value of civil service integrity kono impartiality kono non partisanship kono what is objectivity what is dedication to public service what public service tame public servant hobo what do you mean by dedication to public service okay what is empathy what is sympathy what is apathy what is tolerance towards weaker section of the society all these things will be covered in ethics so ethics will be a
you can say really enjoyable paper to cover. Okay, then emotional intelligence. What are the concept of emotional intelligence? What is the utility of emotional intelligence in public service? Emotional intelligence of public service utility kon achi, application kon achi administration re, governance re. Okay, then contributions of moral philosophers, thinkers, philosophers from India and the world. Okay, then what are the public service values? Okay, public service values and civil service values in public administration. Public administration ethics role kona. Okay, then ethical dilemma kona. What do you mean by ethical dilemma? Question already padichi. Ethical dilemma kona. Okay, laws, rules, regulations and conscience as source of ethical guidance. What are laws, rules, regulation एमाने केमिति ethical guidance को ethical guidance केमिति मिली पारिबो laws रो rules रो regulation रो एसो जिंस रो. Then accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations, then funding, corporate governance. Okay, international relation funding, international relation और funding रे ethical values role कौन अच्छी, corporate governance कौन, corporate governance, corporate ethics कौन, corporate social responsibility कौन, CSR was a important topic in previous OPSC syllabus रे CSR ଗୋଟେ important topic थिला. ठीक अछि. Probity in governance. What do you mean by probity? Basic definition of probity. Probity kono? Concept of public service kono? Philosophical basis of governance and probity. What is information? What is the importance and the importance of information sharing and transparency in government? RTI, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds and challenges of corruptions. Detail हमें discuss करिबा ए जिंस ऊपर. Okay, and case studies on above issue. सब issue ऊपर case study कौन रहुची. ठीक अछि. Okay, so these are the issues. Then गोटे जिंस हमें एठी देखिबा कि GS2 रे से माने IR पार्ट रे एते फोकस देई नाहंती. ठीक अछि. तो ओनली से माने ओडिशा एंड नेबरहुड रिलेशन रखछन. सो इंटरनेशनल रिलेशन से माने किछि स्पेसिफिकली जीएस सिलेबस रे माने मेंशन करि नाहंती. ठीक अछि. सोशल जस्टिस पास तो डेफिनेटली अछि, बट आईआर पार्ट से माने डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट से माने किछि मेंशन करि नाहंती. ठीक अछि. So this is the broad overview of the syllabus of recently released new syllabus of OPSC for the mains examination of 2022. So definitely ए जिनसटा आपण मानको मार्क करिया पड़िबो कि OPSC रो जो नया syllabus आछि से syllabus it is a combination of OPSC syllabus, UPSC syllabus and Odisha, complete Odisha. They have explored every aspect of Odisha in the syllabus. Okay, तेणु आपण मानको सेही लेवल ऑफ प्रिपरेशन करिया पड़िबो काहे कि ना प्रिपरेशन यूपीएससी सिलेबस सहित आपनकर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ओडिसा रिलेटेड एस्पेक्ट रहिला. ठीक अछि. तेणु से जिनिस आपन देखिया पड़िबो. डेफिनेटली आमे ए विषय डिस्कशन तो डेफिनेटली करिबा. तो आज ए वीडियो रे केवल कहिबार थिला आपन मन पय डिटेल सिलेबस कोन अछि. तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. ओके, ऑप्शनल सिलेबस आपण मन पय ऑलरेडी अवेलेबल हे जाइछि, बट जीएस सिलेबस डिस्कस करिबार थिला. वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल. तो थैंक यू वेरी मच. Question, sir, please bring some course for mains. The syllabus is looking very huge, cannot be completed in 8 to 10 months. Okay, okay, we will think about your suggestion. I mean definitely mains ro test series ta karibu. Thus about the syllabus, about the courses, we are getting your point, and let's see what can we do. Then मु अलगा पेपर गुड़ा इंग्लिश रे देबी, एसे पेपर इंटरव्यू गुड़ा देबी. नो सेमती ही परिबोनी. Either you give your mains examination in English and interview in English, or you give in mains examination in Odia and interview in Odia. Okay, okay. Then OCS course pai hame already preliminary test series we have launched. It is starting from tomorrow, so you can join that. You will be provided exclusive guidance for preliminary, and that will be according to the latest pattern. Okay, and mains about mains test series definitely will launch. So but let's see what we can do. ओडिशा मैटेरियल सिलेबस एबे रिलीज होला. ठीक अछि. तो मैटेरियल कोन हबो, वी विल सी कोन कोड पढी हबो कोन हबो देखिबा. सिलेबस तो जस्ट एबे रिलीज होला. ओके, ओके. So thank you everyone for attending the session. Okay, give your best, and
we have our offline center in ID Market area, and also library. To the library is very peaceful and having a good study ambience. You can visit the offline center and you can take the facility of library. And right now also we are running our test series for preliminary. If you want, you can join. Okay, main course, we'll think about it and let you know. Okay, so thank you very much for attending the session. Thank you.